श्रीमद्भागवतम् अद पंचमो स्कन्धः अद दशमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच अद सिन्धु शौवीरपते रघुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादित स द्विजवर उपलब्ध एष भीवा युवा संगणनाङ्गो गोगरवत्तुरं वोडूमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतै सह गृहीतो रषभम् अददर्ह उवाह शिबिकां स महानुभावः यथा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगतिर्न समाहिता पुरुषगतिस्तथा विषमगतां स्वशिबिकां रघुगण उपधार्य पुरुषानदिवगत आहहे वोढार साध्वधिक्रमत किमित विषममुह्यते यानमिति अद त ईश्वरवचक शोभालम्बम् उभाकर्ण्यो भायतुरीयाचङ्कितम् अनसस्तं विज्ञापयाम्ब बभूवुः न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपता साध्वेव वकामक अयमतुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजति नानेन सक वोढुमु हवयं पारयाम इति सांसर्गिको दोष एव नूनम् एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकानां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रघुगण उपासित वृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुद्दितमन्योर् अविस्पष्ट ब्रह्म तेजसं जातवेदसमिव रजसा आवृत्तमदिराह अहो कष्टं प्रातर्व्यक्तमुरु परिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एव भूहिवान् सुचिरं नातिबीव न संकरणाङ्गो जरसा शोभत्रुतो भवान् सखेनो एवाबर एते सङ्कट्टिन इति बहु विप्रलब्धे अभ्य विद्यया रचित द्रव्य गुणकर्माशय स्वचरम कलेवरे स्वस्तुनि संस्थान विशेषे अहं ममेत्येयनति आरोपित मिथ्याप्रदत्ययो ब्रह्मबोधस्तु श्रीं शिबिकां पूर्ववधूवाह अद पुनः स्व शिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रघुगण किमितमरे त्वं जीवन्मृतो मां कदर् दीकृतय भर्दृशासनमदीशरसे प्रमत्तस्य च दे करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति एवं भक्तमभि भाषामानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृता शेब भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मबोध सर्वबोध सुकृतात्मा योगेश्वरचर्यायां नादिव्योद्बन्नमतिं स्वयमान इव विगतस्मय इदमाह ब्राह्मण उवाच द्वयोदितं यक्तम बिभ्रलप्तं वर्धूसमे स्यात्यति वीरभारक गन्धुर्यति स्यादधिकं यमत्वा पीबेति राशो न वितां प्रभातः स्थौल्यं कार्श्यं व्यादय आदयश्च शुद्रुद्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रा रधिर्मन्युरहम्मतयुषुचो देहेन जातस्य किमेन सन्धे जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन् आत्यन्तवत्यद्विकृतस्य दृष्टं स्वसाम्यभावो ध्रुवयित्ययत्र तर्की उच्यतेषो विधिकृत्य योगः विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक् च